So after Cholas now, we have to come towards Vijayanagar Empire. The last empire or the last powerful dynasty of South India. And Vijayanagar Empire, it will span for more than 3 centuries. And in these 3 centuries or so, or 3.5 centuries of its existence, we will find that 4 different dynasties were there. Okay? And within a single dynasty also, many rulers were there. We just have to see 2 or 3 rulers for which or for whom we have the achievements to their name. Okay? Otherwise, we don't have to go into that. Just for a reference, I have given this table. And the sequence of dynasty, just we can keep in mind. The first was the Sangam dynasty, then came Saluva dynasty, then came Tuluva dynasty, and finally Aravidu dynasty. Okay?
but the very Krishnadevaraya's dynasty would be brought to an end when these 5 so-called successor Bahmani states will come together and they will destroy Ramarai in one particular battle. And then this Tuluva dynasty will come to an end. But still Vijayanagara will continue for more than a century by 4th dynasty Aravidu. So this is the case. We just have to see the first dynasty and the 2 rulers of the first dynasty and 3rd dynasty Krishnadevaraya. Nothing else. Okay. So if you see the origin of a Vijayanagara kingdom which became empire, again I will go for one more map. Because after Vijayanagara we are going to start Delhi Sultanate. So this is a map of Delhi Sultanate I will just go for. Okay, so this is the map of a, we can say, Delhi Sultanate. The maximum extent of a Delhi Sultanate that we can find under 2 sultans, Alauddin Khilji, the one we know from Padmavat, and then the Muhammad bin Tughlaq, okay, that we will see later on. So what happened that under Muhammad bin Tughlaq, Delhi Sultanate reached the climax or a zenith as far as power, territorial extent and other things were concerned. And under the same Muhammad bin Tughlaq, disintegration of Delhi Sultanate started. Under the same Muhammad bin Tughlaq, disintegration of Delhi Sultanate started. Because Muhammad bin Tughlaq is known as wisest fool of the world. ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा मूर्ख अगर कोई माना जाता है, he is Muhammad bin Tughlaq, because he was the most educated sultan of Delhi Sultanate, but he became the most unsuccessful ruler. Okay? And Alauddin Khilji is known as the greatest sultan as far as Delhi Sultanate is concerned, because Alauddin Khilji was completely अंगूठा छाप, illiterate by choice, पढ़ना पसंद ही नहीं था, ठीक है, किताब को ऐसे फेंक देना है, बट उसको लोगों को पढ़ना आता था. अपने पॉलिटिशियंस अनपढ़ क्यों होते हैं, उसका रीज़न ये है, पढ़े लिखे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते. कितने आईएएस ने ट्राई किया है रिटायरमेंट के बाद, इलेक्शन कंटेस्ट किए है, आईएएस फेल हो जाते. पॉलिटिशियन अनपढ़ रहेंगे तभी आपका जॉब सिक्योर रहेगा. वो पढ़े लिखे हो गए, उन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया ना, तो आपका जॉब खतरे में आ जाएगा. अच्छा है, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ध्यान में रखिए. यू आर द पॉलिटिकल एडवाइजर्स बिकॉज दे आर इलिटरेट. So best example is Alauddin Khilji. He was completely illiterate, but he is the greatest sultan as far as the achievements are concerned, that we will see later. And because of the Muhammad bin Tughlaq, since he was always in book, तो बाहर की दुनिया का नॉलेज नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज कम था उसके पास. And that's why basically under him the Sultanate reached the zenith, and that was actually due to Alauddin Khilji only. But disintegration also started under him. So Mr. Tughlaq
as he is always called as we can say wisest fool. He is called maverick. सरफिरा बोलते हैं उनको. ऐसे टर्म्स हिस्टोरियंस ने दिए हैं, ये अपने खुद के टर्म्स नहीं है. Why? Because he had taken one decision that since it was a Delhi Sultanate, Delhi was a capital. Being an educated person and वैसे भी UPSC वाले आदमी थे, करंट अफेयर्स बढ़िया था उनका. पूरे दुनिया में क्या चलता था उनको पता है उस समय. whatever used to go he knew and which every ruler should know. So भाई साहब को लगा and फ्यूचरिस्टिक थे. सो चाइना इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया. ये जो आज हम देखते हैं ना, भाई साहब ने 700 साल पहले ही डिसाइड किया था that China is the biggest enemy of India. Okay, and everyone had left their focus upon navy, including maritime threats. He had a focus upon maritime threats. And since he was sitting in Delhi in one afternoon, and he was thinking, I have such a huge empire, but if any maritime threat comes, how I will handle the half of India, south of Narmada. ठीक, खुदा ना खास्ता कोई मैरिटाइम थ्रेट आ गई तो नर्मदा के नीचे जो इंडिया है मैं कैसे हैंडल करूंगा, ऐसा उनको एक कहीं ना कहीं ख्याल आया. ठीक है, द थॉट प्रिवेल्ड इन हिज माइंड and he took a decision to transfer his capital from Delhi to Daulatabad. Daulatabad is a place in Maharashtra which is today near Aurangabad. It was called Devgiri. So strongest fort of Deccan. And before becoming Sultan Muhammad bin Tughlaq as a crown prince, he was posted as a governor in Deccan. तब से उनको महाराष्ट्र से प्यार था और दौलताबाद यानी देवगिरी के फोर्ट से उनको प्यार था, क्योंकि he had observed the fort perfectly कि उस फोर्ट की पावर क्या हो सकती है. And he had made his mind that once he becomes Sultan, he will make Devgiri as a capital or Daulatabad as a capital. Okay, so he decided to shift his capital. Now the point is that तो ज़्यादा पढ़ने लिखने का प्रॉब्लम यही होता है. That's why UPSC ask only for a simple graduate degree. वो फर्स्ट क्लास भी नहीं मांगती है, उसका रीज़न ही वही है. ओके, कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए IAS में, despite the fact it is the toughest examination of the world, because you have to handle the people or public which is literate, which is semi literate or illiterate. यूनेस्को की लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है आपको भी पता है. सो उस हिसाब से इंडिया के जो लिटरेसी रेट है उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक, सो दिस इज द केस. सो यू हैव टू हैंडल मोर एंड लेस द लिटरेट और सेमी लिटरेट पीपल. सो नॉट मच क्वालिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड डिस्पाइट द फैक्ट यू आर गोइंग टू क्लियर द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज द केस. एनीवेज, द पॉइंट क्या है दैट this Muhammad bin Tughlaq, so he now decided that he is going to shift his capital from Delhi to Daulatabad. As a ruler, if you are foresighted, if you are thinking for future, very good, अच्छी बात होती है, करना ही चाहिए, but उनका common sense उनको छोड़ देता था. So when he decided that for any kind of maritime threat, of course मोहम्मद बिन तुगलक के थोड़े से बाद में पोर्तुगीज आ गए. ठीक, पर फिर भी आपको वेट नहीं करने वाला है कौन कब आने वाला है. ठीक, so you are thinking about maritime threat which is good. And now for maritime threat, to control this whole coastal India, you are shifting your capital. But in the process, he forgot that more and less daily threats to his own empire are going to come from northwest of India. See, Tughlaqs, the whole Delhi Sultanate themselves, they were invaders. वो खुद सेंट्रल एशिया से सब लोग आए थे. तो भाई साहब ज़्यादा पढ़ लिख के भूल गए कि जो भी इन्वेजन आने वाला है, मैरिटाइम थ्रेट इज़ गुड, आपको सोचना चाहिए. बट जो कंटिन्यूस इन्विजन, और इनके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी मंगोल के इन्विजन बहुत आ रहे थे. सो ही फॉरगॉट दैट इन्विजन्स आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. सो इफ यू आर शिफ्टिंग योर कैपिटल टू दौलताबाद, दैट इज देवगिरी इन डेक्कन, हाउ यू विल कंट्रोल नॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न हाफ ऑफ योर एम्पायर व्हेन योर एम्पायर इज रीचिंग अप टू साउथ अफगानिस्तान. ठीक है, तो ये भाई साहब का कॉमन सेंस फील करता था उनको. एंड उसी चक्कर में हुआ क्या है कि रेबेलियंस स्टार्टेड इन हिज एम्पायर. And the kind of a threat he had pursued, how I will control South India, practically he lost South India. Okay? By 1336, Vijayanagar Empire came into being. Muhammad bin Tughlaq के empire का वो पार्ट था. The two brothers, हरिहर and बुक्क, जो फर्स्ट डायनेस्टी के पहले रूलर्स है, दोनों भाई थे. They declared their independence from Muhammad bin Tughlaq. And 10 years later, बहामनी का देखिए 1347 है ना, so 11 years later, बहामनी के जो फाउंडर है अलाउद्दीन हसन बहामन शाह,
जो खुद मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर थे डेक्कन में, उन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक का साथ छोड़ दिया. एंड द थ्रेट विच ही वॉज परसुइंग, व्हाट इफ आई लूज साउथ इंडिया, सो डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी मैरिटाइम थ्रेट, अपने ही लोगों ने उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया. And he lost South India permanently. This is the case. So in 1336, you will find Vijayanagar kingdom south of Krishna, and between Narmada and Krishna, Alauddin Hasan Bahman Shah established Bahmani Sultanate. And that is how the new journey of Deccan and South Indian history started. Conflict between Vijayanagar and Bahmani. Okay? So somewhere the policy of Muhammad bin Tughlaq, the Delhi Sultan, was responsible for birth of two new independent kingdoms south of Narmada. Between Narmada and Krishna, Bahmani Sultanate, south of Krishna till Kanyakumari, Vijayanagar Empire. And these two states were going to fight, or these two kingdoms were going to fight for what? Three areas. First, as always, resource scarce Deccan, the only fertile area, so-called Tungabhadra Delta. Raichur Doab, Tungabhadra Doab, land between Krishna and Tungabhadra. They will fight for that, just like Pallava and Chalukya. Then again, Krishna Godavari Delta, land between Krishna and Godavari on Andhra coast, Andhra Odisha coast, and that is second area for which they will fight. And third one was basically now the so-called western coast, where the ports were emerging, and almost during this era, Portuguese will also come to India. 1498, Vasco da Gama, he was going to be the first ever European to have the foot, or to set the foot in India. And Vasco da Gama will bring the Portuguese rule for more than a century. And obviously, Portuguese first they will establish themselves at Kochi, Kerala. But under Krishna Deva Raya, Portuguese will be shifting towards Goa. For them, more than Kerala, Goa will become important. Okay? And greatest Portuguese governor in India, Alfonso de Albuquerque, जो सती खत्म करने वाले थे गोवा से. Okay? He was a contemporary of greatest Vijayanagar ruler Krishna Deva Raya. This was the case, and that's why you will see that Portuguese were emerging as a threat. And in fact, Goa was taken by this Alfonso de Albuquerque from Bahmani Sultanate, and that's why basically now western coast also became the reason for a conflict as far as Vijayanagar and Bahmani are concerned. This part we have to focus upon. And for this so-called Harihar and Bukka, the founders of Vijayanagar, it is said two theories are there. अभी मैं फिर से थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, यानी so-called सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आने से पहले वाला एक मैप निकालता हूँ मैं.
First part. Different theories are associated with the origin of Vijayanagar kingdom. Different theories are associated with the origin of Vijayanagar kingdom. ठीक है. Next, according to one group of scholars, the founder of a Vijayanagar kingdom, that is Harihar and Bukka, were in a service of Hoysala kingdom. Or Hoysal kingdom of Karnataka. At a place called Kampili. ठीक है. At a place called Kampili. 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 Okay. Next, another theory mentions them. Another theory mentions them as a feudatories or vassals. Another theory mentions them as a feudatories or vassals of Kakatiyas of Warangal. Another theory mentions them as a feudatories or a vassals of a Kakatiyas of Warangal. Okay. Next, when Muhammad bin Tughlaq overran Kakatiyas, these two brothers were taken, as a prisoners to Delhi. These two brothers were taken as a prisoners to Delhi. Okay. Next, Tughlaq is said to have converted both of them to Islam. Tughlaq is said to have converted both of them to Islam. And send them back to South India. To carry the glory of Islam. Okay? Send them back to the South India to carry the glory of Islam. Correct? Next. It is said that back in South India, Harihar and Bukka, it is said back in South India, Harihar and Bukka were reconverted to Hinduism. It is said that Harihar and Bukka were reconverted to
Hinduism by a sage called Vidyaranya. By a sage called Vidyaranya. ठीक है? Okay. Next subheading, formation of Vijayanagara kingdom. First point, kingdom. In 1336, Hariharan book founded Vijayanagara kingdom. By taking the advantage of political instability and rebellions. By taking the advantage of political instability and rebellions. Political instability and the rebellions in Delhi Sultanate. ठीक है? In Delhi Sultanate. Next, these two brothers established a new city known as Vijayanagar. In bracket, the city of victory. These two brothers established a new city known as Vijayanagar, in bracket, city of victory. On the southern bank of right bank tributary on a southern bank of right bank tributary of river Krishna. In bracket, UPSC 2015. Okay, 2015 का PYQ है. Again, history and geography has been linked. क्या लिखा है हम लोगों ने? तो कौन सी रिवर आनी चाहिए? आंसर यूपीएससी ने डायरेक्टली रिवर कौन सी पूछा नहीं है, आपको घुमा के दिया है. ऐसा नहीं है, ऐसा करके खाना है आपको. मैक्सिमम एस्पिरेंट ने वो गलत किया था. ऑन अ सदर्न बैंक ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा. जब 10 बार हमने मैप में निकाली है. तुंगभद्रा, ठीक है. तुंगभद्रा इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा. और उसी दोआब के लिए ये फाइट करते थे. उस तुंगभद्रा के साउथ बैंक पे ये सिटी है. ठीक है. जैसे हमने देखा, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी. मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर इंदस. तो वैसे ही इन्होंने पूछ लिया कि कौन से रिवर के कौन से ट्रिब्यूटरी के, और कौन सी ट्रिब्यूटरी मतलब राइट या लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरी, उसके कौन से बैंक पे, साउथ या नॉर्थ बैंक पे कौन सी सिटी है.
ठीक है। तो विजयनगर जो है सिटी ऑफ विक्ट्री वो साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा पे है एंड तुंगभद्रा इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ठीक है, ये चीज़ थी। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा गया था। नेक्स्ट, लेटर दिस वेरी सिटी बिकेम फेमस by the name of Hampi. Later, this very city became famous by the name of Hampi under Krishna Dev Rai. A UNESCO World Heritage Site. Later, the very city became famous by the name of Hampi under Krishna Dev Rai. A UNESCO World Heritage Site. ठीक है। Next, so this is about the formation of a Vijayanagar kingdom. One more point. The dynasty started by Harihar and Bukka. Dynasty started by Harihar and Bukka. Came to be known as Sangam dynasty. Came to be known as Sangam dynasty, which they named after their father. Which they named after their father. ठीक है, clear? So next heading would be Sangam dynasty. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, even though the dynasty was established by both the Harihar and Bukka, even though the dynasty was established by both the Harihar and Bukka, okay, yet the conflict with Bahamanis, started from the time of Bukka. Both for Raichur Dwap, conflict with the Bahamanis started from the time of Bukka. Both for Raichur Dwap and the fort of Bhatkal, BHAT, Bhat, KL, Bhatkal. ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रेट ruler of Sangam dynasty was Kumar Kampan. ठीक है, कुमार कंपन. Next, his greatest achievement was
The destruction of the power of Sultanate of Madurai. His greatest achievement was the destruction of the power of Sultanate of Madurai, established by Muhammad bin Tughlaq. Established by Muhammad bin Tughlaq when he had defeated Pandyas of Madurai. Established by Muhammad bin Tughlaq when he had defeated Pandyas of Madurai. ठीक है. So when Muhammad bin Tughlaq, he had come in deep south for his own conquest. He had defeated Kakatiyas of Warangal, and he had also defeated Pandyas of Madurai. And then in Tamil Nadu, instead of Pandyas, he had started a own sultanate known as Sultanate of Madurai. तो उसको भी किसने खत्म किया? कुमार कंपन ने खत्म किया. ठीक है. So this was a greatest achievement of a कुमार कंपन. तो इसलिए क्या है कि हमारे लिए एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी आ गया. कुछ अचीव करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना. सो नेक्स्ट, हिज कुमार कंपन्स मिलिट्री अचीवमेंट्स. कुमार कंपन्स मिलिट्री अचीवमेंट्स, especially his victory over Madurai. Kumara Kampan's military achievements, especially his victory over Madurai, has been recorded in a famous Sanskrit poetic work. Has been recorded in a famous Sanskrit poetic work. ठीक है. कुमार कंपन्स ओवरऑल मिलिट्री अचीवमेंट्स, especially his victory over Madurai, has been recorded in a famous Sanskrit poetic work written by his wife. Written by his wife, Ganga Devi. Kumar Kampan, his wife was Ganga Devi. She wrote a very famous poetic work recording the victories of her husband, Kumar Kampan. Okay? Written by his wife Ganga Devi and known as, work का नाम क्या है? And known as Madurai Vijayam. ठीक है. Victory over Madurai ना. The Madurai Vijayam is a very famous literary work of Vijayanagar period. ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. ठीक है. Madurai Vijayam. Next. Another great ruler of संगम डायनेस्टी was देवराय फर्स्ट. 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है विजयनगर के ऊपर. हर एक एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन. ठीक. अनदर ग्रेट विजयनगर रूलर was, और संगम डायनेस्टी रूलर was देवराय फर्स्ट. इसलिए टेबल काम में आएगा एज ए रेफरेंस. हु इज हु? देवराय फर्स्ट. ठीक है. तो वही हिस्ट्री जो रिपीट होती है, पुलकेशिन सेकंड वर्सेस नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है कि नहीं? ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तभी थोड़ा सा बॉलीवुड मसाला एंजॉय आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ a great Bahmani Sultan. He was contemporary of
A great Bahmani Sultan. ताजुद्दीन, लिख पाएंगे? मैं लिखूं? ताजुद्दीन फिरोज शाह, वो तो लिख देंगे बहामनी। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहामनी, ठीक है। तो देवराय फर्स्ट ऑफ विजयनगर एंड ताजुद्दीन फिरोज शाह बहामनी ऑफ बहामनी सल्तनत, बोथ वर कंटेम्पररीज ऑफ ईच अदर, ठीक है। अभी दोनों अपने अपने डायनेस्टी के ग्रेट है ना, तो थोड़ा सा टाई होना चाहिए ना, टाई। एक कोई हारेगा तो अगली बार दूसरे को मौका मिलना चाहिए जीतने का, फिर से इसलिए 2 बैटल्स तो बनते हैं, सिंगल बैटल से डिसाइड नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, दे फॉट विथ ईच अदर फॉर 2 टाइम्स। झगड़ने का रीजन आपको पता है, अभी 3 चीजों के लिए झगड़ेंगे, कोई भी हो, ठीक। 3 चीजों के लिए झगड़ेंगे, आपको पता है अभी। दे फॉट विथ ईच अदर 2 टाइम्स। ओके, full stop, same line. In their first meeting, Tajuddin defeated Devaraya first. ठीक है, किसने किसको हरा दिया? ताजुद्दीन डिफीटेड देवराय फर्स्ट। फिर जैसा हमने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया कि नहीं? तो किसने किसकी बेटी किसको दी? सेल्यूकस को अपनी बेटी देनी पड़ी, हारने वाले को अपनी बेटी देनी पड़ी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लिखिए, देवराय फर्स्ट वाज फोर्स्ड टू मैरी हिज डॉटर। Devaraya first was forced to marry his daughter to Tajuddin Firoz Shah Bahmani। रिश्ते तो ऐसे ही जुड़े जाते, ठीक है, कभी खट्टी कभी मीठी। फिरोज शाह और किसको? देवराय फर्स्ट। बैटल के बाद तो ट्रीटी वगैरह साइन होती है ना, तो जो जीतता है तो डिक्टेट करता है टर्म्स। तो नॉर्मली हारे हुए जो थे उनकी बेटियों के साथ शादी करते थे, ये चीजें। तो देवराय फर्स्ट वाज फोर्स्ड टू मैरी हिज डॉटर टू ताजुद्दीन फिरोज शाह बहामनी, ठीक है। इन पॉलिटिक्स में रिश्ते मायने रखते हैं क्या? बिल्कुल। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन देयर नेक्स्ट मीटिंग। अगली बार फिर से बैटल हो गया। इन देयर नेक्स्ट मीटिंग, देवराय फर्स्ट नाउ डिफीटेड ताजुद्दीन फिरोज शाह बहामनी, ठीक है। ससुर जी ने दामाद जी को हरा दिया। देवराय फर्स्ट नाउ डिफीटेड ताजुद्दीन फिरोज शाह बहामनी, ठीक है। तो दामाद जी के गर्दन पे तलवार थी बट नहीं मार पाए, क्योंकि दामाद है, बेटी के सुहाग का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। सब चीजें सोच समझ के जाना पड़ता है, ये चीज थी। He would have almost killed this one फिरोज शाह, but since his daughter was married, और इसलिए तो मैरिज करते थे ताकि अपने बुरे दिन आ जाएंगे तो भी हम बच जाएंगे रिश्तों की वजह से। रिश्ते मायने नहीं रखते लेकिन फिर भी मायने रखते हैं, ये चीज आती है। सो बेसिकली देवराय फर्स्ट ही नाउ डिफीटेड ताजुद्दीन फिरोज शाह बहामनी। ओके, नेक्स्ट, और 2023 में जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, देवराय फर्स्ट वॉज फेमस फॉर हिज इरिगेशनल डेवलपमेंट्स। उन्होंने एक डैम बनाया जो आज भी है, जो कर्नाटका और तमिलनाडु यूज करते हैं, मेत्तूर डैम। देवराय फर्स्ट वॉज फेमस फॉर हिज इरिगेशनल डेवलपमेंट। और सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, विजयनगर के कौन से रूरल इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए फेमस थे? आंसर इज देवराय फर्स्ट, ठीक है। देवराय फर्स्ट वॉज फेमस फॉर हिज इरिगेशनल डेवलपमेंट इन ब्रैकेट यूपीएससी 2023। यूपीएससी डिस्ट्रक्टिव चीजें नहीं पूछती है, बैटल्स वगैरह, वो कंस्ट्रक्टिव चीजें पूछती है।
ये ध्यान में रखना है, बिकॉज वी आर सिविल सर्वेंट्स, वी आर टू बिल्ड अ कंट्री, नॉट टू डिस्ट्रॉय द कंट्री। तो माइंडसेट वैसा बनाना, इसलिए क्वेश्चन वैसे आते हैं। नहीं तो है फिर बैटल पूछ सकते हैं। वो सीडीएस और एनडीए की जो एग्जाम रहती है ना, जो यूपीएससी लेती है, वो डिफेंस की है ना, तो वहां पे बैटल ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया के भी जो एंग्लो फ्रेंच वॉर वगैरह सब है, टिपू बिपू सब कुछ, ये यूपीएससी सिविल सर्विस नहीं पूछती है। और एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट या पब्लिक वेलफेयर अचीवमेंट पूछेंगे आपके, डीपीएसपी के अचीवमेंट्स। उस समय डीपीएसपी नहीं था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बट अचीवमेंट्स होती थी ना, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, डिस्ट्रक्टिविज्म के बारे में नहीं। डिफेंस के एग्जाम में तो बैटल पूछने ही पड़ेंगे, तो इसलिए डिफेंस की सीरीज के पेपर देखिए, आपको यूपीएससी के सारे पेपर्स में डिफेंस के मामले ज़्यादा दिखेंगे। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन डिफेंस वाले रहते हैं। एंड सिविल सर्विस में आइए, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वेलफेयर, इसके ऊपर ज़्यादा पूछते हैं। दैट्स व्हाई जिसका काम उसका नाम, जो मैंने बताया था शुरुआत में, रीजन वो है। नेक्स्ट वन, he built a famous dam across Tungabhadra. He built a famous dam across Tungabhadra. And later across the river Krishna, which today is known as Mettur Dam. He built a famous dam across the river Tungabhadra and then across the river Krishna, क्योंकि डेक्कन है ना, पानी की कमी है, ड्रॉट्स कॉमन थे, डैम बिल्ड करना जरूरी था। लेटर अक्रॉस द रिवर कृष्णा, विच इज टुडे नोन एज मेत्तूर डैम। कृष्णा के ऊपर जो डैम है वो मेत्तूर डैम फेमस है, ठीक है। क्लियर? लास्ट पॉइंट उनका, देवराय फर्स्ट का। अ फेमस इटालियन ट्रैवलर, नाम लिखता हूं, अ फेमस इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी कॉन्टी। फेमस, क्योंकि विजयनगर के हर एक डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। तो फेमस इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी कॉन्टी विजिटेड द कोर्ट ऑफ देवराय फर्स्ट। ठीक है, visited the kingdom of Devaraya first, and while appreciating his prosperity and public welfare measures, and while appreciating his prosperity, his मतलब Devaraya first prosperity and public welfare measures, has also mentioned about presence of slavery अंडर विजयनगर किंगडम। तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। ही हैज आल्सो मेंशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी इन विजयनगर किंगडम। पहले तो तारीफ की है कि सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज वेल, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, स्लेवरी है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग, देवराय सेकंड। देवराय प्रथम हो गए, देवराय सेकंड आ गए। फर्स्ट पॉइंट, ही इज नोन एज ग्रेटेस्ट रूलर of Sangam dynasty and second greatest overall. He is known as the greatest ruler of a Sangam dynasty and second greatest overall. ठीक है, नेक्स्ट,
famous Persian traveler Abdul Razzaq. Famous Persian traveler Abdul Razzaq visited the court of Devrai II. ठीक है, द फेमस पर्शियन ट्रैवलर, पेयर बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, विजयनगर के रूलर एंड फॉरेन ट्रैवलर, पेयर देंगे, कौन सा सही है कौन सा नहीं है देखना आपको। फेमस पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक विजिटेड द किंगडम ऑफ देवराय सेकंड। ठीक है, एंड हैज प्रेज हिम फॉर हिज टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज, and has praised him for his tolerant religious policies. ठीक है, next, Devrai II was the first Vijayanagar ruler. Devrai II was the first Vijayanagar ruler to recruit Muslims both in his army and administration. ठीक है, Devrai II was the first Vijayanagar ruler to recruit Muslims both in his army and administration. ठीक है, next, especially Devrai II recruited Turkish archers. Especially Devrai II recruited Turkish archers in his army, which enabled him to gain victories over Bahmanis. Which enabled him to gain the victories over Bahmanis. ठीक है, clear? Last point of Devrai II. Devrai II had a famous title, Gaja. Devrai II had a famous title, Gaja, Gaza, Gaja Bhenta, 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 Kara, Kara, Gaja Bhenta Kara. Okay, in bracket, एलिफेंट हंटर, उनको एलिफेंट की शिकार करना अच्छा लगता था। ठीक है, नॉर्मली टाइगर और लायन की करते, भाई साहब एलिफेंट की करते थे। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड गजभेंतकार। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, सलुवा डायनेस्टी, जिसके बारे में हमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक दो लाइन्स लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर देवराय सेकंड, आफ्टर देवराय सेकंड, Sangam dynasty became weak. Sangam dynasty became weak, and by AD 1485, and by AD 1485, it was brought to an end
It was brought to an end by Saluva Narasimha. क्या हो गया? Saluva Narasimha, the prime minister of last संगम रूलर, जिनके नाम के बारे में कोई गारंटी नहीं है. अच्छा है, एक नाम कम याद रखना पड़ेगा. ठीक है. Sangam dynasty was brought to an end by the prime minister of a last Sangam ruler, and the name of the prime minister is Saluva Narasimha. ठीक है. किंग का नाम कंट्रोवर्सी है, इसलिए नाम दिया नहीं गया है, जो कि हमारे लिए अच्छा है. ठीक है. लेकिन एक काम की चीज जरूर लिखनी है सलुवा में. लास्ट पॉइंट, संगम was the only Vijayanagara dynasty to worship Lord Shiva. Sangam dynasty was the only Vijayanagara dynasty to worship Lord Shiva. सलुवा से लेके अराविदु तक सब लॉर्ड विष्णु की पूजा करेंगे. ठीक, यह हमारे काम की चीज है. ठीक है. फाउंडर के नाम में ही नरसिंह है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं. संगम डायनेस्टी वाज ओनली विजयनगर डायनेस्टी टू वर्शिप लॉर्ड शिवा. रेस्ट ऑफ द डायनेस्टीज वर वैष्णवाइट डायनेस्टीज. रेस्ट ऑफ द डायनेस्टीज वर वैष्णवाइट डायनेस्टीज. ठीक है. तो सलुवा हो गए, तुलुवा हो गए और अराविदु हो गए, सब क्या है? वैष्णवाइट डायनेस्टीज है. इतना बस ध्यान में रखना है. ठीक है. सलुवा का लास्ट पॉइंट लिखते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं. सलुवा डायनेस्टी आप देख सकते हो 20 साल चली थी. 20 साल ज्यादा नहीं है. 20 साल बाद चेंज. सलुवा डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लास्ट सलुवा रूलर. सलुवा डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लास्ट सलुवा रूलर. सलुवा रूलर जो थे लास्ट वाले, उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस डायनेस्टी को खत्म किया. हर एक डायनेस्टी का प्राइम मिनिस्टर नई डायनेस्टी चालू कर रहा है. सलुवा डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लास्ट सलुवा रूलर. फिर से उनके नाम में जाने की जरूरत नहीं है. प्राइम मिनिस्टर का नाम सामने है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लास्ट सलुवा रूलर. ठीक. एंड द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज तुलुवा नरसिंह और वीर नरसिंह. नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज तुलुवा और वीर नरसिंह. ठीक. Saluva dynasty was overthrown by Tuluva or Veera Narasimha, the prime minister of last Saluva ruler. Okay? अगर एक ब्रेक ले लीजिए. ब्रेक के बाद कृष्ण देवराय की अचीवमेंट्स आर्ट एंड कल्चर के साथ देखेंगे, क्योंकि विजयनगर मतलब सब कुछ कृष्ण देवराय है. वो सलुवा डायनेस्टी के रूलर है.
Now we have to come towards third dynasty of Vijayanagar, and that is Tuluva dynasty, the greatest dynasty, and to one person, that is Krishna Dev Rai. So this Veera Narasimha, he was like a founder as far as the dynasty was concerned, and Veera Narasimha was like a half brother of Krishna Dev Rai and a step brother. Okay? Half brother or a step brother. Okay, so he ruled only for 5 years or so, or rather we can say 4 years only, and then he was replaced by Krishna Dev Rai, who is known as the greatest ruler as far as the Vijayanagar dynasty is concerned. So Krishna Dev Rai was the greatest ruler of a Tuluva dynasty also, and Krishna Dev Rai was the greatest ruler overall also. That point we have to keep in mind. So for 20 years Krishna Dev Rai would be there, and obviously so many achievements we can have to the credit of Krishna Dev Rai. So again I will go for one map just to have the idea who were the contemporaries of each other. यानी कृष्ण देव राय के contemporaries कौन कौन थे, that we have to go for map.
Okay, so in this map we can see who are contemporaries of each other. फेमस सुल्तान्स क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गए, आईआर से लेके हिस्ट्री तक, करंट से लेके पास्ट तक, उल्टा चले गए ना, सीधा चले जाना अच्छा रहता है, उल्टा महंगा पड़ता है. ओके, so different great rulers, they were ruling different parts of India, or they were present in a different parts of India at the same time. और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कौन किसका कंटेम्पररी है. एक तो रूलर्स जो एक दूसरे के कंटेम्पररी है, वरना कोई अपने रिलीजियस पर्सनैलिटी जो कि किसी किंग या एम्पर के कंटेम्पररी है, जैसे बुद्धा एंड महावीरा बिंबिसार के वैसे. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है. सो इफ यू सी देन एज ऑफ नाउ दिल्ली सल्तनत जो है उसके आखिरी दिन थे. लास्ट डायनेस्टी वाज रूलिंग नोन एज लोधी डायनेस्टी, एंड लोधी डायनेस्टी हैड टू सुल्तान्स, that means 3 sultans were there. As of now, Krishna Devaraya, when he was ruling, there were 2 sultans. First is Sikandar Lodi, okay, and second is Sikandar Lodi's son Ibrahim Lodi. They were contemporaries of Krishna Devaraya. तो जब कृष्ण देवराय कृष्णा के साउथ में रूल कर रहे थे, so in North India we had Lodi sultans, Sikandar as well as Ibrahim Lodi. Correct? In 1526, Babur, Zahiruddin Muhammad Babur, the founder of Mughal Empire, he killed Sultan Ibrahim Lodi in a first battle of Panipat. Okay? Babur, the founder of a Mughal empire, he basically brought to an end Delhi Sultanate. Delhi Sultanate को अगर खत्म किसी ने किया है वो बाबर ने किया है. And Babur killed last Delhi Sultan, Sultan Ibrahim Lodi of Lodi dynasty in a first battle of Panipat. And then Babur founded Mughal empire. So when Babur started ruling in North India, still Krishna Devaraya was ruling south of Krishna. इसलिए दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हो गए. ठीक है, ये चीज आ रही है. एट दैट टाइम इन गुजरात देयर वाज अ सल्तनत ऑफ गुजरात. सो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कारनामे किए ना, कारनामे, जिसकी वजह से उसके एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ. सो एक तो पहले विजयनगर गए, देन बहामनीज वर गॉन. सो इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो गुजरात सल्तनत ऑल्सो गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोहम्मद बिन तुगलक. In Bengal सल्तनत विल गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोहम्मद बिन तुगलक. हर कोई इंडिपेंडेंट हो रहा था कि मिस्टर तुगलक चीज़ ही वैसी थी. ये सारी चीज़ थी. सो एज ऑफ नाउ इन गुजरात, सो गुजरात सल्तनत बेसिकली was there in Gujarat, and 2 rulers were there, 2 sultans of Gujarat. Okay? They were contemporary of Krishna Devaraya. One is Mahmud Begra and second is Sultan Bahadur Shah of Gujarat. Okay? So they were also contemporaries of Krishna Devaraya. Okay? Then by that time on a Konkan coast and the parts of Karnataka coast including Goa, Portuguese had established themselves firmly. And greatest Portuguese governor in India, his name was Alfonso de Albuquerque. The famous Alfonso mangoes, they basically were first grown under him, the world famous mangoes. That's why his name is there, for mangoes. Okay? So this Alfonso de Albuquerque, he had abolished sati from Goa, and he was also the contemporary of Krishna Devaraya. Okay? And then as I mentioned, Krishna Devaraya will destroy Bahamani Sultanate, और उस बहामनी सल्तनत के 5 टुकड़े करेंगे. उसमें से एक जो आए थे आदिल शाही, ठीक, तो उसके एक सुल्तान थे अली आदिल शाह, वो भी कृष्ण देवराय के कंटेम्पररी है. तो इतने सारे पर्सनालिटीज एक दूसरे के कंटेम्पररी थे.
लेकिन और एक पर्सनैलिटी बाकी है जो कि ना कोई सुल्तान है, ना कोई बादशाह है, ना कोई रूलर है। अंडर सिकंदर लोधी, सिख रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव सिख रिलीजन के फाउंडर है, सिकंदर लोधी के अंडर उन्होंने फाउंड किया, यानी वो सिकंदर लोधी के कंटेम्पररी है, यानी वो कृष्ण देवराय के भी कंटेम्पररी हो गए। सो दैट आल्सो यू शुड राइट। Okay, so the founder of Sikhism, that is the first Guru, Guru Nanak Dev, he is also the contemporary of Krishna Dev Rai, and not just Krishna Dev Rai. Guru Nanak Dev is contemporary of all of the so-called rulers, as I have mentioned in a map. हर कोई एक दूसरे का कंटेम्पररी, सिंपल। ओके, मैप के थ्रू ये बेटर आप समझ सकते हो। सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने जाओगे कौन किसका कंटेम्पररी है, फिर दिमाग घूम जाएगा। अभी भी घूम सकता है लेकिन थोड़ा कम घूमता होगा, वो आप बता पाओगे कितना घूम रहा है कितना नहीं। ओके, so we can give the heading achievements of Krishna Dev Rai. Achievements of Krishna Dev Rai, 1509 to 1529. ठीक है, 20 साल रूल किया था उन्होंने। पंद्रह सौ नौ से लेकर 1529, वो टेबल में लिखा है ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, कृष्ण देव राय was the greatest ruler of Tuluva dynasty and also the greatest of Vijayanagara Empire. Krishna Dev Rai was the greatest ruler of the Tuluva dynasty and also the greatest of the Vijayanagara Empire. ठीक है, next, his name and fame was spread everywhere. His name and fame had spread everywhere. Okay? And even the Babur, the founder of Mughal Empire, used to feel threatened by Krishna Dev Rai. Used to feel threatened by Krishna Dev Rai. ठीक है, next, in his famous autobiography Tuzuk-e-Babari, in his famous autobiography
तुजुक ए बाबरी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी। Also known as Babarnama, also known as Babarnama। ठीक है। Babar has praised Krishna Dev Rai, Babar has praised and appreciated Krishna Dev Rai for his all-round achievements। Babar has praised and appreciated Krishna Dev Rai for his all-round achievements। ठीक है। नेक्स्ट, टू फेमस पोर्तुगीज ट्रैवलर्स, नाम लिखता हूं मैं, टू फेमस पोर्तुगीज ट्रैवलर्स। Two famous Portuguese travelers, Domenigo Pace and Duerto Barbosa। Okay, Domenigo Pace and Duerto Barbosa visited the empire of Krishna Dev Rai। ठीक है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम हैव प्रेज, both of them have praised the splendor, the grandeur, splendor, the grandeur, 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 and the richness of Vijayanagar Empire। Okay, it was the richest empire of the world at the time। The richness of Vijayanagar Empire। ठीक है। Next, they have also appreciated efficient administrative and military policies of Krishna Dev Rai। They have also appreciated the efficient administrative and military policies of Krishna Dev Rai, along with his religious tolerance, along with his religious tolerance। ठीक है। The harmony and the policy of, we can say, benevolence, the policy of moderation, okay, towards all the religious faiths। You as a ruler might have your own faith, but you are not, we can say, going for violence against the another faith। You are allowing the other communities or other religions to profess their religion, to follow their practices, okay, to follow their worship, etc., etc. That is called religious tolerance। Tolerance means somewhere basically you are maintaining the kind of endurance, the kind of, we can say, the peace and kind of, we can say, the moderation which is required for maintaining law and order also। Because if there is a religious intolerance, then obviously communal harmony might be disturbed, communal riots can be witnessed like that। Like yesterday at Pahalgam, militants killed people, but they were asking the religion, naam batao,
all the Hindus have been killed, and they were asked to go for this kalma and just to, we can say, pray at Azad forcefully. Then they shot them. The video is available. So this is the case which is known as, we can say, intolerance. Okay? So here when we say the rulers are tolerant, so they will follow the equidistant policies, a kind of a secularism only without constitution or democracy. And that is up to the monarch, because it's a monarchy ultimately. So if the monarch, if he uses discretion, then he can go for, we can say, intolerance. Like the sultans of Delhi, they were intolerant against non-Muslims. But Mughals, they were secular. And especially Akbar, he is known for Hindu-Muslim unity. And that's why till the British came, we did not witness communal riot. Even under Aurangzeb, there was no communal riot. Why? Because the policies of Akbar, the harmony and peace which he had brought, the composite Indo-Persian society, composite Indo-Islamic society, which Akbar had introduced, which was continued by Jahangir and Shah Jahan also. So this is the case. So that is a kind of, we can say, dependent upon ruler. And that's why in monarchy, each and every ruler is not great. One is great, others are common. Reason is that personality. Okay? So it is not just your military achievements. You are known by your administrative achievements, your welfare achievements, your religious policies, gender equality that you follow, and so on. So this is the case. Okay, next part. क्या बताया मैंने अभी? ठीक है, फिर भी कोई परफेक्ट तो रहता नहीं है. So still we have some, we can say, issues. Next. Yet under Krishna Dev Rai, and that means Krishna Dev Rai as well as the Vijayanagara Empire as a whole, Devdasi tradition or dancing girl tradition, yet under Krishna Dev Rai and Vijayanagara Empire as a whole, Devdasi and dancing girl tradition was visible. Okay? Devdasi or dancing girl tradition was visible. Next. Pace has given the evidence of sati. Pace has given the evidence of sati. And Krishna Dev Rai इतने powerful ruler है, फिर भी उनके अंडर सती हुआ है. जैसे हमने देखा first ever evidence of sati कब आया? When we saw the first ever evidence of sati, I don't need year. Just tell me the empire. And if you are able to tell the ruler, that will be good. Huh? Gupta is very good. Fantastic. Specifically, if any ruler. He wasn't a great Gupta ruler. याद रखने का तरीका सीसेट का जैसा होता ना, वेन डायग्राम. हिस्ट्री याद रखने के लिए वेन डायग्राम करना है, जनरल से स्पेसिफिक में आना है. Now, as he said, Gupta Empire. Now, you have to think whether he was a great Gupta ruler or a later Gupta ruler. फिर लॉजिक लगाना है. ग्रेट होता तो सती जैसी नेगेटिव चीज नहीं आती, तो लेटर होना चाहिए. ठीक. सो यू आर कमिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. हिस्ट्री याद रखने का ये तरीका है. सो भानुगुप्ता द लेटर गुप्ता एम्परर, अंडर हिम बेसिकली द ईरान इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन AD 5110. अभी भी मैंने बताया ना, अल्फोंसो ने सती खत्म किया गोवा से. उस समय भी मैंने बताया एग्जैक्टली 1000 ईयर्स लेटर सती खत्म किया है. 1510 में खत्म किया है अल्फोंसो ने. 510 AD में पहला सती का रिकॉर्डेड एविडेंस आता है, लेटर गुप्ता एम्परर भानुगुप्ता. तो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक यू कैन कम. पहले गुप्ता एम्पायर अगर याद आया तो ग्रेट है या आपका लेटर है, ध्यान में रखो. जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सती, दिस नेगेटिव फीचर, तो ग्रेट गुप्ता के अंदर चांस कम है. ऐसा नहीं कि हो सकता है. अभी कृष्ण देव राय ग्रेट है, फिर भी सती दिखता है यहाँ पे, पर फिर भी ग्रेट रूलर्स के अंदर चांस कम है, तो लेटर गुप्ता रूलर तो कौन होना चाहिए, थोड़ा सा वो याद रख सकता है आपको. और वैसे भी एग्जाम में आपको ऑप्शंस देने वाले हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. उतना यूपीएससी आपका काम करने वाली है. So later Gupta Emperor Bhanugupta, we had a first recorded evidence of Sati. And at that time, that inscription mentions Bhanugupta has said, I am an emperor or a ruler, still I cannot go against the society. मेरे सामने एक औरत को बेसिकली जिंदा जलाया गया, मैं कुछ नहीं कर पाया. But still he was a later ruler. कृष्ण देव राय तो पावरफुल है, ग्रेटेस्ट है, फिर भी the Domenico Pace has mentioned about evidence of Sati under कृष्ण देव राय. देखिए जैसे स्लेवरी का एविडेंस वो निकोलो डी कंटिन्यू दिया था ना, ऐसे Domenico Pace he has given the evidence of Sati even under Krishna Dev Rai.
तो यहां से क्वेश्चंस आएंगे आपको. And Duerto Barbosa has given the evidence of polygamy and child marriages. वही है, साउथ इंडिया का गोल्डन एज है विजयनगर, डार्क एज सोसाइटी का कंटिन्यू है. ठीक, गुप्ता का साउथ इंडियन वर्जन है विजयनगर, मतलब गोल्डन एज रहेगा यहाँ पे, बट सोसाइटी के मामले में डार्क एज चलेगा. तो कृष्णा देवराय के अंडर भी क्या है, पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज विजिबल. That has been mentioned by whom? Duerto Barbosa. ठीक है. Next, most famous or most important administrative officials under Krishna Dev Rai were known as Nayaks, as we have in Odisha also, na? Nayaks. Correct? Most famous or most important administrative officials under Krishna Dev Rai were known as Nayaks, because the parts of Odisha was also the part of Krishna Dev Rai's empire. Part of the Odisha was ruled by Gajapatis, and parts of the Odisha was ruled by Vijayanagar. Okay? Next, what happened? Next part. However, Nayaks also used to perform military functions. UPSC can give Nayaks were performing only administrative functions under Krishna Dev Rai. No, they also used to perform military functions. So they were civilian as well as military officials. इतना ध्यान में रखना है. ठीक है. नायक अपनी अनिल कपूर की मूवी है ना, एक दिन का सीएम, याद रखने के लिए आसान है. ठीक है. नेक्स्ट, they used to be paid for their services not in cash. They used to be paid for their services. वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे ना उस समय, but they were not paid the salary in cash. They used to be paid for their services not in cash but through land grants. ठीक है. They used to be paid for their services not in cash but through land grants. Okay. Next, these land grants were known as amaram. ये टर्म भी आएगा आपको. These land grants were known as amaram. AMARAM, amaram. Okay. Correct. And hence the Nayaks came to be known as Amar Nayak, the one who used to hold Amaram. Who are they? Amar Nayak. ठीक है. ये टर्म हमेशा आता है एग्जाम में, Amar Nayaks. So who were Amar Nayaks? The civilian and military officials under Krishna Dev Rai who used to get the land grant called Amaram. Simple, एक लाइन में रिवीजन आना चाहिए. ठीक है. Next, Krishna Dev Rai destroyed Bahmani Sultanate and got a famous title. Krishna Dev Rai destroyed the Bahmani Sultanate and got a famous title.
ठीक है, बहामनी सल्तनत के 5 टुकड़े करवा दिए, आदिल शाही, बारिद शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही। मैप निकालने की जरूरत नहीं है, टाइटल बताना चाहिए। ही डिस्ट्रॉयड द बहामनी सल्तनत into the 5 autonomous or independent states and got the title Yavan. Bahmanis were Yavan. Yavan means foreigners. Bahmani had come from Persia. Okay, and hence Krishna Devaraya got a title Yavan Rajya Prasthapaka. Krishna Devaraya got a famous title Yavana Rajya Prasthapaka. ठीक है, Krishna Devaraya got a famous title of Yavana Rajya Prasthapaka. ठीक है, next, under him golden age of Telugu language and literature started. साउथ इंडियन मूवीज की शुरुआत यहां से होती है। अंडर हिम द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, तेलुगु वाज आल्सो द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ विजयनगर एम्पायर। Even though their capital Hampi was in Karnataka, but their court language was Telugu. Okay? Telugu was a court language of Vijayanagar Empire. And being the patron of Telugu language and literature, Krishna Devaraya is also called as, or he is also known as आंध्र भोज। दूसरा टाइटल आ गया उनका, और आपका लक अच्छा है, 2 ही टाइटल है अपने काम के, बाकी भी है अपने काम के 2 अच्छे बात है। ठीक है, सो बीइंग द पैटर्न ऑफ तेलुगु लैंग्वेज एंड लिटरेचर एज वेल एज कल्चर, ठीक है, ही केम टू बी नोन एज आंध्र भोज। ठीक है, so he is called Yavan Rajya Prasthapaka as well as Andhra Bhoj. और एक अच्छी चीज हमारे लिए है, नेक्स्ट, फर्दर विजयनगर रूलर एज अ होल, फर्दर विजयनगर रूलर्स एज अ होल and Krishna Devaraya in particular did not take any big titles. ठीक, और टेंशन कम हो जाएगा अपना। Did not take any big titles. Okay? Nor they had a belief in a divine light theory. खुद को भगवान से कंपेयर वगैरह नहीं करते थे। वैष्णविज्म के चैंपियन जरूर थे, बट मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, ठीक, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। Nor they had a belief in a divine light theory. Okay? Next. Despite being the greatest ruler of his empire, Krishna Dev Rai took the simple title Raya. Okay? उनका नाम था कृष्णदेव, birth name, but he is called Raya, simple title. Okay? Next.
कृष्ण देव राय फोर्स Ali Adil Shah of Bijapur. Krishna Dev Rai force Ali Adil Shah of Bijapur. To cede is to cede CEDE. To cede CEDE. The port of strategic port of Goa. The strategic port of Goa. To विजयनगर. ठीक है. Okay. Next. He also forced Ali Adil Shah. He also forced Ali Adil Shah to surrender the fort of Bhatkal. He also forced the Ali Adil Shah to surrender the fort of Bhatkal. To Vijayanagar kingdom or Vijayanagar empire. Okay. In bracket UPSC 2024 लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भातकल का फोर्ट आदिल शाही रूलर से किसने लिया था, किसने छीना था? कृष्णदेव राय. ओके. नेक्स्ट. ड्यू टू हिज पावर Alfonso de Albuquerque, the greatest Portuguese governor in India, maintain friendly diplomatic relations. Greatest Portuguese governor in India, maintain friendly diplomatic relations with Krishna Dev Rai. ठीक है. नेक्स्ट. अल्फोंसो सेंट Alfonso sent his famous ambassador Louis Friar, Luis, Louis, Friar, Friar, to the court of Krishna Dev Rai. ठीक है. जैसे सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीस को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, सेम वाज डन बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क. करेक्ट. Alfonso himself was powerful, still he had struck a fear for Krishna Dev Rai, and hence he maintained a good diplomatic relations with Vijayanagar, for which the ambassador Louis Friar was sent to the court of Krishna Dev Rai. ठीक है. Next. Krishna Dev Rai issued famous gold coins having the image of वराह. क्या है वराह? अब तो आना चाहिए. सॉरी.
Very good. Wild boar incarnation of दशावतार. तो किसके है दशावतार? किसके है? Of Lord Vishnu. Krishna Devaraya issued the gold coins having the image of Varaha, the wild boar incarnation of Lord Vishnu. ठीक है. Correct. Next, being the champion of Vaishnavism. Being the champion of Vaishnavism, his gold coins also had. Being the champion of Vaishnavism, his gold coins also had the images of Tirumala Venkatesha or Tirupati Balaji. These coins also have the images of Tirumala Venkatesha. लॉर्ड विष्णु का साउथ इंडिया में जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड तिरुमला वेंकटेश और तिरुपति बालाजी एज इज फेमस. मतलब ये टेम्पल भी जो तिरुपति बालाजी का है वो कृष्ण देवराय ने बनाया है, दैट वी विजिट नॉर्मली. ठीक है. तो उनके कॉइन्स के ऊपर लॉर्ड विष्णु एज अ तिरुमला वेंकटेश दिखाए जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, कृष्ण देवराय also issued the gold coins having the images of a mythical bird. Krishna Devaraya also issued the gold coins having the images of a mythical bird known as Gandha Brinda, BHRINDHA. गंधब्रिंद. ये कोई बर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो मिथिकल बर्ड बेसिकली उनके कॉइन्स के ऊपर दिखाया गया है. गंधब्रिंद. ओके. नेक्स्ट, however under Krishna Devaraya a special type of copper coins however under Krishna Devaraya special type of copper coins normally used by foreign merchants were famous. Normally used by foreign merchants were famous. And they were known as Fanam, FANAMS, Fanams. Okay? They were known as Fanam. Okay? In bracket UPSC 2022. ये 2022 में यूपीएससी पूछ चुकी है. फनम द कॉपर कॉइन्स अंडर विजयनगरस. ठीक है. नेक्स्ट, Krishna Devaraya himself was a very good Telugu scholar. Krishna Devaraya was himself a very good Telugu scholar. And in fact, first ever work of a Telugu language was written by
Krishna Dev Rai himself. And in fact, the first ever work of Telugu language was written by Krishna Dev Raya himself. Famously known as a mukta. माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा, ये तेलुगु लिटरेचर का पहला वर्क है एंड इट वाज रिटन बाय कृष्ण देवराय हिमसेल्फ. दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. ओके. Next, if Gupta Emperor Chandragupta II had Navaratna or 9 jewels in his court, okay? If Gupta Emperor Chandragupta II had a Navaratna or 9 jewels in his court, okay, then Krishna Dev Raya's court had Ashtadiggaj, 8 giant literary figures. Ashtadiggaj, दिग्गज मतलब giants, giant literary figures in his court. ठीक है. Next, most famous of them was a father of Telugu poetry. Allah Sadi. Allah Sadi. Pedanna. Allah Sadi Pedanna. ठीक है. Next, he was famously called as Andhra Kavi Pitamaha. He was famously called as or known as Andhra Kavi Pitamaha. Who was called Allah Sadi Pedanna. He was called as Andhra Kavi Pitamaha. ठीक है. Next, he wrote a famous Telugu poetic work, Manu Charitam. He wrote a famous Telugu poetic work, Manu Charitam, and Hari Katha Vilasam. ठीक है. And Hari Katha Vilasam. Correct. Next, Ashtadiggaj of Krishna Dev Rai.
also had one more famous personality. Ashtadiggaj of Krishna Devaraya also had one more famous personality known as Tenali Ramakrishna. अगर आपने टीवी सीरियल देखा होगा, तेनाली रामा as he is called, in bracket Chanakya or a Birbal of South. He was famous for his presence of mind, his talent, fast decision making. ठीक है, तेनाली रामकृष्ण इन ब्रैकेट चाणक्य और बीरबल ऑफ साउथ. जैसे अकबर के कोर्ट में बीरबल थे वैसे ही. ओके, लास्ट हेडिंग आएगा इनका कृष्ण देवराय के अंडर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ये सारा लिटरेचर देखा हमने, एडमिनिस्ट्रेशन देखा, कॉइन्स देखे जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, फॉरेन ट्रैवलर उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं. नाउ लास्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. फर्स्ट पॉइंट, फेमस फोक डांस and theater tradition. Emerge under Vijayanagar Empire. Known as Yakshagana. Known as Yakshagana. In bracket UPSC 2007. Yakshagana. Okay. Next. Famous mural paintings. Famous mural paintings. Known as Lepakshi paintings. Were developed. Known as Lepakshi paintings were developed on temple walls of Vijayanagaras, on temple walls of Vijayanagar Empire. In bracket UPSC 2013. 2013 में पूछा गया है. Next, these paintings are called as Lepakshi because they were first painted upon temple walls of Lepakshi temple in Andhra Pradesh. Okay, these paintings are called as the Lepakshi paintings because they were first painted on a temple walls of Lepakshi temple in Andhra Pradesh. Built by Krishna Devaraya. Built by Krishna Devaraya. ठीक है. नेक्स्ट,
Since Sangam dynasty used to worship Virupaksha form of Lord Shiva. Since Sangam dynasty used to worship Virupaksha form of Lord Shiva, comma, Virupaksha temple was built at Hampi. Virupaksha temple was built at Hampi under Sangam rulers. Okay? Virupaksha temple was built at Hampi under Sangam rulers. Okay? Next. However, it was repaired and rebuilt. However, it was repaired and rebuilt by Krishna Dev Rai. However, it was repaired and rebuilt by Krishna Dev Rai. Okay? And Lepakshi murals or Lepakshi mural paintings were now also painted upon walls of Virupaksha temple. Okay? Lepakshi mural paintings were now also painted upon the walls of Virupaksha temple. Okay? Next. Krishna Dev Rai combined Vesar style of temple building Vesar style of temple building followed by Chalukya's comma Rashtrakutas and Hoysals. Chalukyas, Rashtrakutas and Hoysals. Okay? Next, he integrated this style with the Dravidian style of Cholas and Pandyas. He integrated this style with Dravidian style of Cholas and Pandyas. Okay? Next, hence, Vijayanagara temple emerged as a unique amalgamation. Hence, the Vijayanagara temples emerged as a unique amalgamation of all regional temple building styles of South India. Hence, the Vijayanagara temples emerged as a amalgamation of all temple building styles of South India. That means all regional temple building styles of South India. Okay?
नेक्स्ट, कृष्णदेवराय बिल्ट है, 2-3 पॉइंट्स ही हो जाएगा, अभी निर्माण आएगा. कृष्णदेवराय built 2 famous temples at Hampi. Known as Vithala Ramaswamy Temple. Known as Vithala, Vitthal, Vithala Ramaswamy Temple. Vithala is also the form of Lord Vishnu, which is worshipped in Maharashtra today. Tirupati Balaji is worshipped in South, and Vitthal is worshipped in Maharashtra. So Krishna Devaraya built a temple, a famous temple of Vitthal Ramaswamy Temple for Lord Vishnu. Okay. Next, another temple built by him is known as Hazar Rama Swami Temple. Another temple built by him is known as Hazar Rama Swami Temple. Which has 1,000 pillars. Okay, which has 1,000 pillars. And when tapped, these pillars emit musical notes. इधर को टैप करो आप, सारे गमा पधने सा आवाज सुनाई देना शुरू हो जाता है. When tapped, these pillars emit musical notes. ठीक है. Notes or notings, as we say. Okay. Next point, Krishna Devaraya converted the Gopuram. Krishna Devaraya converted the Gopuram. क्या है Gopuram? The sculptural gateway of a Dravidian temple into Raya Gopuram, that is Royal Gateway. ठीक है. तो किंग के पावर का सिंबल बनेगा राय गोपुरम. ओके. सेकंड लास्ट पॉइंट, कृष्ण देवराय इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कल्याण मंडपम. ये 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, राय गोपुरम एंड कल्याण मंडपम. कृष्ण देवराय also introduced the concept of Kalyana Mandapam, in bracket huge stone platform. In bracket a huge stone platform. कल्याण मंडप क्या होता है? Huge stone platform in a temple complex. In temple complex. ठीक है. Last point. This platform was used
to perform festivals like Mahanavami Dibba. This platform was Navami. This platform was used to perform the festivals like Mahanavami Dibba. Dibba, Dibba, comma, marriage ceremonies, and celebration of military victories, ठीक है. One more point. Under Krishna Dev Rai, horse became the common sculpture on temple walls and pillars. Under Krishna Dev Rai, horse became a common sculpture on temple walls and pillars. आपका निर्माण हो गया. ठीक है. So here Vijayanagar Empire is over. टेम्पल वॉल एंड पिलर्स दोनों के ऊपर कॉमन स्कल्पचर क्या होगा? मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड एनिमल और फिगर इज हॉर्स. ठीक है. सो हियर विजयनगर इज ओवर. टुमारो वी विल गो फॉर दिल्ली सल्तनत. डिफरेंट डायनेस्टीज एंड आप लोग एंजॉय करोगे. एंजॉय क्योंकि एग्जाम में कम आएगा, लिखना लिमिटेड है, लेकिन सुनने में मजा आएगा. आर्ट एंड कल्चर का वनवास खत्म हो गया अभी.